आज है ना, वैसे मैं सोच भी रहा था कि वन ऑफ द पॉइंट्स टू डिस्कस आज के लिए मुझे लग रहा है वही सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस होगा, एंड दैट इज शुड वी गो फर्दर और नॉट. क्योंकि ये मैंने सोचा था कि आफ्टर 1, 2 और 3 मीट्स ना वी शुड रिव्यू होना जरूरी है कोई भी चीज़ का. जब तक रिव्यू नहीं होगा तो वी कैन नॉट ब्रिंग सम इम्प्रूवमेंट, एंड अगर उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, जस्ट एक टाइम इनपुट है बट उसका कोई आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है, देन सच एक्टिविटी शुड बी ग्रेसफुली स्टॉप. सो टुडे लेट अस फर्स्ट डिसाइड ऑन दैट, बिकॉज जब ये स्टार्ट किया था ना तो आइडिया वॉज कि ओके एवरी क्वार्टर हम लोग मिलेंगे एंड बिटवीन द 2 क्वार्टर्स कुछ एक एक्टिविटी होना चाहिए. वो हो नहीं पा रहा. And to some extent I can say I am also responsible for it, and everybody is responsible कि nobody is taking up the lead. Majoritarily I take it on myself, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था तो मैं सोचा था मैं लीड लूँगा, मैं परस्यू करूँगा, मैं फॉलोअप्स रखूँगा, बट वो मेरे से हो ही नहीं पा रहा. मे बी दिस ईयर आई एम हैविंग लॉट ऑफ लेक्चर्स, सो उसके वजह से एकदम पैक्ड अप शेड्यूल है. एंड सेम शुड बी विद यू ऑल ऑल्सो कि तुम लोग इंजीनियरिंग में हो, कोई मेडिकल में है, कोई जॉब पे है, एंड हर एक का कोई ना कोई कमिटमेंट तो होता ही है. सो बिटवीन दैट ये सब है बहुत अच्छा, बट उसका बेनिफिट होना चाहिए. जस्ट हम लोग मिल रहे हैं, मिलने में भी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हम मिल सकते हैं, तो वी विल गिव सम डिफरेंट नेम. गेट टुगेदर ऐसा क्वार्टरली रख देंगे. लेट अस नॉट गिव द नेम chiasma. फिर मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके ऊपर रॉन्ग इंप्रेशंस आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, एंड वी डिड इट फॉर अ गुड कॉज. इफ यू नॉट एबल टू डू इट वी विल कंटिन्यू दिस विदाउट कॉलिंग इट एज chiasma. ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, एंड दिस हैज टू बी अ कलेक्टिव डिसीजन. भले आज हम लोग इतने ही हैं, अगर एक्टिवली आगे बढ़ना है तो ईच वन ऑफ अस टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू, अदरवाइज छोड़ देंगे तो भी चलेगा. तो इंडिविजुअल इनपुट्स चाहिए मुझे ऑन दिस पॉइंट. क्या करना है? आज तो बारिश है, मीन्स इज वन ऑफ द रीजन कि मुझे लग रहा है टर्नआउट कम है, बट दैट कैन बी परहैप्स अ रॉन्ग थॉट ऑल्सो. टर्नआउट शायद कम ही होता रहेगा, बट हम लोग हमेशा ऐसा कंसोल करते, कोई भी चीज़ को हम लोग प्रॉपर आउटकम नहीं दे पाते तो वी कीप ऑन कंसोलिंग आते. नहीं आने तो वाले होंगे, बट मे बी ये था वो था, सो वी डोंट नो. एंड परहैप्स एट योर एंड आप लोग को ज़्यादा मालूम रहेगा, बिकॉज एज ग्रुप सेम है तुम लोगों का, तो कुछ डिस्कशंस होता रहेगा आपस में, फ्रेंड्स में. सो एनी काइंड ऑफ इनपुट्स फॉर येस और फॉर नो, फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है. पहले अपना अपना इनपुट्स दे दो. तो कौन स्टार्ट करेगा इसमें? हु वुड लाइक टू बिगिन? एनीबडी? What I feel is like there are 2 parts to this. First part is about the meeting, and second part what we thought of, we will be meeting and we will be in touch online. Online, हाँ. Right. So as far as the data which is seen on there, I mean how many people visit the site and actually look at the thing, that is only when after the meet is over. For 1 week people do come, do post, do get the answers, get their queries solved. But after a week or let's say 2 weeks, it's subside. Nobody comes. Frankly speaking, nobody comes. Only few of them are there who normally visits, log into the system and checks out. Okay. Second thing about the meeting is even like today. But then what is the outcome out of it? People are not coming. So do we have any ways and methods by which? What I have seen is people when they come over there, they do get their answers. So people want answers, that is one thing for sure. Yeah. Okay. So what I feel is we should do some activity here and we should keep updating ourselves everywhere. Like we have also created a page on Facebook. There we can do certain like post some photos, photographs or some visits like last time after the meet got over, second meet, he suggested कि sir why don't we record this and put it on YouTube या ऐसे कुछ तो करें जिससे जो नहीं आ सक रहे, means they are a part of chiasma, member है, but they are not able to turn up due to some reason, at least they get the updates. Means basically what he wants to add up is our efforts should be increased. अपनी तरफ से means या तो एक काम कर सकते हैं कि under this chiasma
we try to form a committee, working committee, ऐसे 2-4 दिन रहे, and उनका हर वीक मीट हो, वो लोग मिले, कुछ डिसाइड करें, आगे वो आइडियाज फ्लोट करें, ऐसे कुछ करेंगे तो मे बी इट विल अगेन रिवाइव। इन द सेंस आई अलोन एम नॉट एबल टू डू, मेरे साथ कोई रहेगा तो मैं उसमें कुछ एडजस्टमेंट, मेरा ऐसे नहीं है कि आई एम हाईली पैक्ड अप, आई हैव लेक्चर्स, जैसे तुम लोग का भी कोई ना कोई कमिटमेंट है, बट थोड़ा प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा हूँ। प्लस अकेला मैं सोच रहा हूँ अरे करूंगा एंड देयर इज नथिंग वेयर आई हैव टू आंसर ना। अगर मुझे किसी को आंसर देना हो तो मैं भी एक प्रेशर में रहूंगा, या एक आई विल ड्रॉ लाइन ऑफ कमिटमेंट के ये दिन तारीख तक मैं ये कर लूँ ऐसा। एंड तुम लोग बहुत छोटे बच्चे हो और तुम लोग सोचते रहेंगे कि सर को कैसे क्वेश्चन किया जाए, तो वो भी आई डोंट नो एज अ थॉट ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं करते हैं। लेट अस कलेक्टिवली इन्वॉल्व सम पीपल एंड डू इट। फर्स्ट बॉटम लाइन कि ईच वन ऑफ यू आर फॉर स्टॉपिंग और फॉर कंटिन्यूइंग, वो पहले डिसाइड करते हैं, फिर लेट अस टॉक फर्दर कि भाई अच्छा ये करना है, बंद करना है तो कोई बात ही करनी नहीं है, वी विल स्टॉप। बट अगर कंटिन्यू करना है तो बहुत सीरियसली उसके लिए सोच के अच्छा बेटा then we need to think कि how it has to be the way as we have thought of, जो हमने सोचा था, ड्रीम किया था, वो एक्सटेंड तो यहाँ से बहुत दूर दिख रहा है, बट नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है, इट्स पॉसिबल। तो क्या करना है, यस कि नहीं, दिस शुड नॉट बी सेंटिमेंटल आंसर, इट शुड बी अ प्रैक्टिकली पॉसिबल आंसर, क्योंकि सेंटिमेंटली तो मुझे भी लगेगा कि अरे क्या इतना करने के बाद अभी क्यों छोड़ने का। सो बट थिंक प्रैक्टिकली कितना हो पाएगा। इफ एनीबडी इज टेलिंग यस देन उसका इनपुट चाहिए कि उसको अच्छे से चलाने के लिए कारिश्मा को क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए। फिर चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर से पहले इमीडिएटली एक अर्जेंट मीट रखते हैं ना, जिसमें मैं सबको परस्यू करता हूँ आने के लिए। अभी तो क्या जस्ट एन SMS इज सेंट, अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो आई विल पर्सनली कॉल अप, आई विल एंश्योर एवरीबडी कम्स, एटलीस्ट 90% ऑफ ऑल द मेंबर्स। मेंबर्स का भी लिस्ट काफी बड़ा है अपना, वी हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 70-80 तक मेंबर्स है, बट दिस इज जस्ट 10% ऑफ व्हाट हैव टर्न्ड अप। तो थोड़ा उसको फोर्स अप कर सकते हैं। मैं सॉरी आई इंटरप्टेड यू, बट यू टेल यस देन व्हाई एंड हाउ। Sir, one thing which I don't like is we have 70 to 80 members, but I personally don't know even 10 members of class. Okay. What I feel is we should have one introduction of every new member. How? One thing. How? When we meet, the new member which is there, which has not attended any single meeting prior to this, he should be called personally by you. You can post. Yeah. ठीक है. And he should introduce himself to the batch. See, but we are all preoccupied and so much of commitments are there कि one single introduction of a new person and then meeting after 3 months, perhaps we'll forget everything about it. हमको उसका नाम चेहरा कुछ भी नहीं याद रहेगा. At least we can remember the face. हाँ, but how far will this help? What I say is, if we remember the face, we can meet anywhere in this world. So we can at least. चलो ठीक है, but ये है ना, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत लेस है। Whatever. मिल जाएगा, बात भी हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके, गुड इनपुट। नेक्स्ट, कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसा मीन्स ये थोड़ा ऐसा फीबल आइडिया लग रहा है, रॉन्ग नहीं लग रहा है। इसको मटेरियलाइज करने में ना थोड़ा टाइम लगेगा। एनीथिंग एल्स? Afterwards, what will happen? That when we will know each other now, we will share our ideas. Oh, good. Okay, fine. But then, what his point was very correct, but the solution is not very strong and supportive to it. That each member of chiasma should know each other very well. So how can that be not possible? एक तो इंट्रोड्यूस उसने अपने आप को कर दिया, एक अपना जो ऑनलाइन सिस्टम है, ये स्लीप का, एक जो अपना ऑनलाइन सिस्टम है उसमें अगर सब लोग फ्रीक्वेंटली विजिट करेंगे तो भी एक फर्क पड़ेगा। अपना प्रोफाइल में फोटो डाल सकते हैं, so people can recognize each other. So coming on the site is very necessary. That will perhaps give more introduction to each other. Then next, okay, those who have joined late, let me tell that since the strength was less and this was one of the point of discussion which I had thought of for today, so I started with that. Is there any point in continuing further with chiasma? We should stop. This is just a discussion, nothing to be sentimental on this. एक discussion का point है कि करना है कि नहीं करना है,
क्योंकि करने के बाद रिव्यू तो होना चाहिए ना कि जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है. सो जस्ट एक डिस्कशन इज ओपन अप एंड सबका इनपुट्स रिक्वायर्ड है. सो निमित सेड यस, उसका इनपुट है कि करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? यू डू नॉट से दैट व्हाई इट शुड बी डन. So one more thing, that today we are at the study age. We are not yet graduated, we are not at the job. Yes. Afterwards, after 3 to 4 years, we will go for job. Yeah. And we will meet our boss. And after communicating with him, we will know that he is one of the guys from. हो सकता है ना? Yes. Yes. And its probability is quite high. हाँ ठीक है, ओके फाइन. Because we actually go to same colleges. हाँ, एंड जो ये भी है, जॉब्स भी है, वो मोर और लेस मे बी बिटवीन 5, 7 मैक्स 10 ऐसे कंपनीज है. तो कहीं ना कहीं तो ये कॉमन आ ही जाएगा फॉर इंजीनियरिंग. सो दैट विल बी हेल्पफुल. सो वी शुड कंटिन्यू. ओके, बट दिस फीलिंग इज नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी ना, बिकॉज This is my feeling. yeah, see, this is your individual feeling, but I want this to come in all. So what can be done? अभी सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं करना है, पहले वो करना है एंड फिर उसको जनरलाइज करना है. So how this feeling can be brought in everybody? This is said now, means when we started and when I introduced the concept, so to everybody this was said, this is one of the benefit which people can get. But then I don't know whether it was conveyed properly or maybe जब भी नीड रहता है, कैसा रहता है, we all including myself, जब आग लगेगा ना तभी हम सोचते हैं कि चलो गोवा करते हैं. So जब उसकी जरूरत आएगी ना तब people will start searching around here and there. Till then things just keep on floating. चल रहा है तो चल रहा है, बाद में देखा जाएगा. chiasma नहीं है तो और कहीं ना कहीं से भी people are sure of के लिंकअप तो हो ही जाएगा, कहाँ से कॉन्टैक्ट निकल जाएंगे.